Water Day serves as a crucial platform to underscore the importance of fresh water and advocate for sustainable stewardship and fair distribution. This year's theme is, water for peace. Water for peace. Yes, that's the theme of this year's World Water Day. And it highlights the interconnectedness between water and global stability, stressing the necessity for collaboration and joint efforts to tackle water-related issues. So did you know that there's 153 countries that share rivers, lakes, aquifers, and water resources? And yet only 24 countries have cooperation agreements. So everyone's already, we had the pledge कि हम सब मिल करके जल के लिए कार्य करेंगे, जल संरक्षित करेंगे अपने अपने घरों में, अपने अपने कम्युनिटीज में। जय गंगे। जल है, जल है। We'll request all of the dignitaries to come forward for the sacred lamp lighting ceremony. Subham karotu kalyanam arogyam dhan sampada satru buddhi vinasaya deepajyote namostute. So as I mentioned that today we are celebrating the necessity of water and global stability and security, and stressing the importance of collaborations to ensure our water resources are safe. So with that, I would request Shri Vinod Mishra ji, who is the country manager of the United Nations Office for Project Services, and with whom we are very happy to be working together. The Global Interfaith Wash Alliance and Parmarth Niketan is happy to come together with the United Nations Office for Project Services to also Har Ghar Jal and green strategic partnerships to bring about this work for the sustained commitment to protect our water resources. So I'd request Shri Vinod Mishra ji, who has over 30 years of experience in water and sanitation sector, to come forward and set the tone, really give us an introduction and a context to our gathering today. So जोरदार तालियों से श्री विनोद मिश्रा जी का स्वागत। नमस्ते। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय साध्वी जी, हिज एक्सेलेंसी एम्बेसडर रॉयल डेनिश एम्बेसी न्यू दिल्ली, मिस्टर अंशुल जैन, कन्वेनर नॉर्डिक वाटर फोरम, मिस्टर कैस्पर, he is the counselor environment political and economic division, मैडम सिंघल जी, एंड मंच पे उपस्थित अन्य डिग्निटरीज, यहाँ वर्ल्ड वाटर डे के अवसर पे पधारे हुए सभी सम्मानित प्रतिभागीगण, साथियों, मित्रों, देवियों और सज्जनों, मैं यूनॉप्स की ओर से और ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस की तरफ से, परमार्थ निकेतन की ओर से, and on behalf of the embassy, Royal Danish Embassy की ओर से मैं सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम इस कार्यक्रम को पूज्य स्वामी जी की ब्लेसिंग और आशीर्वाद से, साध्वी जी के बहुत सारे सहयोग से, नंदिनी जी के बहुत सारी प्रेरणा से हम इस कार्यक्रम को आज कर पा रहे हैं। This year the United Nations has given call to celebrate World Water Day as a water for peace, शांति के लिए पानी, और ये बहुत बड़ा नारा है इस साल का। आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, गजा में अभी लड़ाई चल रही है, यूक्रेन में चल रहा है वार, और वहाँ पानी के लिए एक तो बम्बार्डमेंट हो रहा है, पीपल आर स्ट्रगलिंग फॉर द लाइफ,
and they are actually struggling for the water also. वाटर टैंकर जा रहा है, उनको पानी नहीं मिल रहा है, और एक पानी की लड़ाई एक अलग चल रही है, एक तो वार की सिचुएशन में। और हम अगर और दृष्टि से देखें तो एक कंट्री के भीतर विद इन स्टेट पानी की बहुत लड़ाई है। इन इंडिया कावेरी की पानी पे कर्नाटक लड़ रहा है, तमिलनाडु लड़ रहा है, महाराष्ट्र लड़ रहा है। इंडिया में आप ब्रह्मपुत्रा की पानी को देख लीजिए, आप गंगा के पानी को देख लीजिए, हर जगह पानी को लेके स्टेट के बीच, कंट्रीज के बीच लड़ाई चल रही है। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी सतलज को लेके झगड़ा चल रहा है, ब्रह्मपुत्रा और गंगा के पानी को लेके बांग्लादेश इंडिया के बीच चल रहा है। तो बहुत सारी दुनिया में पानी को लेके बहुत सारा स्ट्रगल एंड देयर इज अ वॉर सिचुएशन इज हैपनिंग इन द एंटायर वर्ल्ड। इसलिए यूनाइटेड नेशन ने इस वर्ष को वाटर फॉर पीस का नारा दिया है, और इसीलिए हम आज एकत्रित हुए हैं इसी पे बात करने के लिए। जिस वर्ष जो अभी हमारे देश में प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब स्वच्छ भारत मिशन खत्म हो रहा था 2019 में, एट द सेम ईयर ही हैज गिवन कॉल फॉर द जल जीवन मिशन। और जल जीवन मिशन टारगेट ये है टू प्रोवाइड वाटर टू ईच हाउस होल्ड, पोर्टेबल वाटर एंड सेफ वाटर, पीने लायक साफ और शुद्ध पानी सबको घर में मिले, ये नारा दिया। एंड द सेम ईयर सितंबर 2019 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर of Denmark both signed a strategy, it's called Green Strategic Partnership। तो भारत और डेनमार्क ने एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया 2019 में, और उस पार्टनरशिप में everywhere they are talking about the green solution for the solid waste management, green solution for the energy, green solution for the water, environment. So everywhere what India can do and move forward from west to green, वो टेक्नोलॉजी, हाउ कैन यूज द डेनिश टेक्नोलॉजी इन इंडिया, वो जो एक स्ट्रेटजी साइन हुआ उसी के भीतर UNOPS, United Nations Office for Project Services, and the government of Denmark, Ministry of Foreign Affairs also joined hand and signed an agreement to provide support in the country on the Jal Jeevan Mission. And Jal Jeevan Mission, we are working in the 4 states, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Rajasthan and Assam. मैं केवल चूंकि बेस्ट प्रैक्टिस, गुड प्रैक्टिस पे एक किताब भी अभी आज विमोचन करेंगे जो हमने कंपाइल किया है। वी हैव प्रिपेयर्ड द कंपेंडियम ऑफ द गुड प्रैक्टिसेस फ्रॉम द यूपी एंड उत्तराखंड, दैट वी आर गोइंग टू रिलीज टुडे। इट विल बी अवेलेबल फॉर द पब्लिक फ्रॉम टुमारो। तो वो हम रिलीज करेंगे। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जब पानी नहीं था घरों में तो परिवार में झगड़े हो रहे थे कि कौन पानी हैंडपंप से ले आएगा, कुएं से या नदी से। पीने का पानी घर में कौन लाएगा? महिला लाएगी, पुरुष लाएगा, बेटी लाएगी, बेटा लाएगा, और ये रोज की लड़ाई घरों में चल रही थी और हो रही थी। दूसरी लड़ाई फैमिलीज के बीच थी, किस हैंडपंप से कौन पानी लेगा, क्योंकि घर में पानी उपलब्ध नहीं था, 17% कवरेज था, और उसकी लड़ाई एक अलग चल रही थी। इसके अलावा जो गांव के बीच लड़ाई चल रही थी, किस ओवरहेड टैंक से कौन गांव पानी पिएगा। तो लड़ाई और झगड़े बहुत तरह के पानी पे हो रहे थे। हम under Jal Jeevan Mission, the slogan is and target is to provide every household potable and safe drinking water in household by the December 2024. Now they have extended 2 more years up to 2026, December 2026. अभी हम 74-75% कवरेज हो गया है इंडिया में, and we are proceeding to have a coverage of 100%. उस पे काम चल रहा है। मैं केवल 3 बातें कहूँगा: पानी की अवेलेबिलिटी, पानी की एक्सेसिबिलिटी और पानी की क्वालिटी। अवेलेबिलिटी, हमें चाहिए पानी आने वाली जनरेशन के लिए। इफ यू वांट to life on the earth to continue for the longer period, we need water, हमें पानी चाहिए, इसलिए पानी को बचाना है।
सेव करना है। सेकेंड थिंग इज एक्सेसिबिलिटी। एवरीवन शुड हैव राइट टू गेट एटलीस्ट 55 LPCD लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी सबको मिले देश में। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये तभी होगा जब समुदाय, NGO, सरकार और सारे पार्टनर मिलके इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन काम करेंगे। और तीसरी बात है वाटर क्वालिटी। वाटर की अगर पानी की शुद्धता हम मेंटेन नहीं करेंगे तो पानी की उपलब्धता से कुछ नहीं होने वाला है। तो पानी की शुद्धता के लिए फील्ड टेस्ट किट हर गांव में 5 महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। फील्ड टेस्ट देखिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ अवेलेबल है, तो आप उसको देख सकते हैं एंड यू कैन रियलाइज हाउ कैन यू टेस्ट द वाटर। तो वाटर सिक्योरिटी के लिए अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और वाटर क्वालिटी, तीनों बातों की बहुत जरूरत है। और आज पूज्य स्वामी जी के निर्देशन में हम एक नारा यहाँ से देंगे, इस मंच से देंगे कि हम पानी को साफ रखें, ये बहुत बड़ी जरूरत है। दूसरी बात है हम पानी को बचाएं, मिसयूज न करें, ये बहुत आज की जरूरत है। और तीसरी बात है हर आदमी की पहुंच एटलीस्ट 55 लीटर पर पर्सन पर डे शुड बी अवेलेबल टू एवरीवन टू सेव द लाइफ। हर आदमी के पास इतनी पानी की उपलब्धता हो। इन 3 नारा हम चाहते हैं कि पूज्य स्वामी जी के निर्देशन में हमको मिले और हम आगे तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एंड डेनिश एम्बेसी के साथ हम इस कोलैबोरेशन को आगे ले जाएं। और हमारे नॉर्डिक कंट्री 5 कंट्रीज के वाटर फोरम के कन्वेनर हमारे बीच बैठे हुए हैं, अंशुल जैन जी, हम इनके साथ भी सहयोग करेंगे और ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस के साथ हम और मजबूत कोलैबोरेशन करके इस नारे को भारत में और पूरी दुनिया में आगे ले जाने को सोच रहे हैं। इस उद्देश्य से आज का कार्यक्रम हम यहाँ आयोजित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मुझे लग रहा है कि सोच नहीं रहे हैं, इस वर्ल्ड वाटर डे के उपलक्ष्य में इसको संकल्पित कर रहे हैं कि हम इस कार्य को साथ में मिलकर के आगे बढ़ेंगे। एंड फॉर द कुंभ मेला ऑल्सो वी विल डू समथिंग वेरी बिग टुगेदर टू रेज वाटर अवेयरनेस। I will request our founder of HariOm SMILES, Smt Monica Singhal ji, to come forward and संक्षेप में अपने आशीर्वाद सबको दे। और particularly दिव्यांग और जो स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रन हैं, जो वोनरेबल मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, उनको कैसे वाटर रिसोर्सेज सिक्योर करने के लिए हम सब मिलकर के कार्य कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत थैंक यू है। एंड आई वांट टू actually express my gratitude to all the people sitting here and to all the people sitting there. हम सब मिलकर बहुत कुछ कर सकते। Can we do it? Yes, we can do it. ये हमारी अर्थ है, this is our earth, and earth has been serving us since ages continuously, and the most expensive things have been given to all of us free of cost by that God, by Mother Earth, and by everybody sitting here, because we all want to work for our nation, for our country, for the world together. So say Shukrana. शुक्राना किसका? अर्थ का। इट हैज गिवन अस वाटर। जल को हमको है बचाना, जल को हमको है बचाना, शुद्ध इसको है करते जाना, जल ही ने तो जीवन दिया है, हम सबको हाँ जन्म दिया है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। और जो बात अभी बोली कि यहाँ पर देश विदेश एवरीबडी इज फाइटिंग फॉर वाटर, दिस वॉज अनाउंस्ड बाय आवर सेजेस। हमारे ऋषि मुनि, दे वर साइंटिस्ट बियॉन्ड साइंटिस्ट। साइंटिस्ट पूरी जीवन लगा देते हैं ह्यूमैनिटी को आराम देने के लिए। दे कीप ऑन डूइंग सर्च एंड रिसर्च। दिस इज व्हाट आई ऋषि मुनीज लाइक मुनि जी एंड लाइक साध्वी जी, they sacrifice their life
ये फाइंड करने के लिए कि किसको सेव करना है, किसको प्रिजर्व करना है, एंड व्हाट इज मोस्ट कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव। तो हमेशा बोला जाता था जल देवता, और जल को क्या करा जाता था? प्रणाम किया जाता था। तो जिसको प्रणाम करते हैं उसको दूषित कैसे कर सकते हैं? वी बीन वेस्टिंग इट। और जो हरिओम स्माइल्स का एक ही सपना, एक ही नारा, हरिओम स्माइल्स दिन रात बस एक ही बात से सांस लेता है, उठता है, सोता है एक ही विचार के साथ, ना कोई मन से अपंग रहे, ना कोई तन से अपंग रहे, ना कोई मन से अपंग और ना कोई तन से अपंग। और उसके लिए जो तन से अपंग है, उसके लिए हम सब में से बहुत लोग मन से अपंग हैं। In spite of having all the comforts, all the luxuries, so much of stress, anxiety, war in the world, how is it possible? Because water is every moment listening to our emotions. It is absorbing whatever we are thinking. तो अगर यहाँ पे सफाई होगी तो वहाँ पे सफाई अपने आप हो जाएगी। गंगा मैया की, गंगा मैया की, हर 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 गंगे। So जो disabled हैं, they are actually not disabled. Those children are specially abled. They have a unique quality within themselves. Everybody is uniquely designed in this whole universe, in the whole world. If we collect all the people, the fingerprints are not going to match. Each and every person has a unique fingerprint. So every person जो हमें disabled भी लग रहे हैं, उनके अंदर बहुत ability, एक uniqueness है। हम सबको मिलकर उनको grow करना है। और जब हम हंसते हैं, खुश होते हैं, तो इतना फर्क नहीं पड़ता। पर अगर हमारे द्वारा बाकी सब लोग खुश होते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। सो वी हैव टू बिकम द सोर्स। शुक्राना। सो बस 2 मिनट हम सब शुक्राना बोलेंगे फॉर वॉट एवर गॉड हैज गिफ्टेड अस विद। इस वाटर का, इन आंखों का, इस जल का, इन नदियों का, इन वृक्षों का, आकाश का, ऋषि मुनि का, सब गिवर्स का शुक्राना, शुक्राना। एंड टुडे आफ्टर मीटिंग ऑल दीज आई फील ये सपना जरूर पूरा होगा। थैंक यू, शुक्राना। So what a beautiful message about cultivating the attitude of gratitude as being really the source of addressing our water scarcity and scarcity in general. When we offer gratitude, we fill ourselves with abundance. And in that state of abundance, we use our resources with responsibility. And so I will move the program forward and ask the Dean of our Wildlife Institute of India, Dr. Ruchi Badola ji, to come forward and to share her message on this occasion, because I know Wildlife Institute of India is doing so much incredible work, and they're just starting. Today is your Ganga Prairies training, our second Ganga Prairies training, and we're very excited to have you. So Dr. Ruchi ji, without further ado, your beautiful message. Respected dignitaries on the dais and all present here, it is with immense pleasure and pride that I stand before you on the occasion of the World Water Day celebrations on this holy land of Parmarth Niketan Ashram. We started working with the National Mission of Clean Ganga in 2016 to conserve the rivers and wetlands and the aquatic species present therein, because it was believed, and it is true, that Ganga becomes Ganga and a river becomes a river and a wetland becomes a wetland when it has all the species that are supposed to be there, both within it and around it. And that is what the Ganga taught us, to conserve and preserve life within and life around. And it is with great pleasure I'm saying, because we started our first Ganga Prairie workshop in this holy land of Parmarth Niketan Ashram with the Ashirwad of Pujya Swami ji and Sadhvi ji. And also because today we have one person present here, Shri Rajiv Ranjan Mishra ji, the former DG of the National Mission for Clean Ganga, who had the vision
to realize the potential of community engagement and community participation in conservation of rivers and wetlands, and it was his impetus, his motivation that kept us going to work tirelessly. And you know, the theme for today's World Water Day is Water for Peace. And I think the Ganga Prairies today, 2018, we had 250 Ganga Prairies from 5 Ganga states. Today we have 400 Ganga Prairies from 11 Ganga Basin states. We all come together in peace. We all come together in motivation. We all come together with a pledge to conserve the Ganga and its tributaries and the life in it and around it. We know that even today, more than 50% of the global population lives less than 3 kilometers away from the rivers. The rivers have been the originators of our civilization. I don't need to tell you that. But also, I also don't need to tell you that today our country is actually using more than 25% of all the globally extracted groundwater. The proportion, and most of it is being used for agriculture, that is more than 87%. And the proportion of surface water is going down while the proportion of groundwater is increasing in agriculture. That is not a good indication. And to address all these, this is a very integrated and complex issue which needs to be understood at the highest scientific levels, at the highest levels of policy, but to be translated into very simple actions at the grassroots levels, which can be done by every citizen of this country. Everybody who aims to become a Ganga Prahari or a guardian of rivers. I am a Ganga Prahari. Today we have 400 designated Ganga Praharis here, but I believe that in our heart and in our karma, we all are Ganga Praharis, and we pledge together to work together with this beautiful range of people and organizations who are here for the survival, for the ecological restoration of our rivers and wetlands. Jai Gange, Jai Hind. Amazing. Short and sweet. हम सब गंगा प्रहरी है. हम सब? Very good. With that, I request Shri Anshul Jain ji, the convener of Indo-Nordic Water Forum, of whom our respected Shri Vinod Mishra ji was speaking about. And थोड़े समय में ही आप हमारे पास यहाँ आए परमार्थ निकेतन, but you are such a beautiful part of the family already. So welcome, and we look forward to hearing you. Honorable Swami ji, Honorable Sadhvi ji, His Excellency Mr. Freddy Svane, Ritu Khanduri ji, Vinod Mishra ji, other dignitaries, respected ladies and gentlemen, Namaskar and Jai Gange. We gather here today on the sacred banks of Mother Ganga to discuss one of the most critical issues facing humanity, water. Water is life, yet it has also become a source of conflict and strife between nations, communities, and peoples. In the 21st century, we have seen how water scarcity has led to internal displacement, social unrest, and even war. From the Nile to the Ganges, the Jordan to the Indus, the lack of access to clean, secure water supplies has bred tension, resentment, and violence across borders. Water has become a geopolitical tool wielded as a weapon by the powerful against the powerless. This cannot continue. We cannot allow our most precious resource that sustains all life on this planet to be monopolized, militarized, and weaponized. Water must be respected as the divine nectar, Divya Ras, the very essence of life itself. Instead of fighting over it, we must come together to conserve it, share it equitably, and preserve it for all. At the Parmarth Niketan Ashram, the Global Interfaith Wash Alliance has been tirelessly working to bring together faith leaders, policymakers, grassroots activists, and international organizations to address this crisis
through the unifying lens of spirituality. The ancient Indian wisdom of respect and interconnection with nature must be combined with the cutting-edge innovation, technology, and commitment to sustainability that our Nordic partners like Norway, Sweden, Denmark, Finland, and Iceland bring to the table. The Nordic nations have long been global leaders in sustainable development, circular economies, and green technologies. They understand the economic progress and environmental preservation must go hand in hand. This is the same spirit enshrined in our Vedic principles of coexisting harmoniously with the natural world. So today, through the platform of Indo-Nordic Water Forum, I invite all the water stakeholders from India and the Nordic countries to forge a new, reinvigorated partnership on water for peace. Let us combine our ancient traditions of venerating nature with modern solutions in water management, waste treatment, and clean energy to create a holistic, replicable model for the world. Most importantly, we can work together to shape global narratives, policies, and geopolitical cooperation around water as a unifier rather than a source of conflict. We can raise a powerful voice that our rivers and lakes must be respected as sacred commons that connect and sustain all people and all of Earth's bounty. This is the yogic, Vedic wisdom emanating from the Parmarth Niketan and should go to the world at large. When we see all species, all people as part of one universal family, Vasudhaiva Kutumbakam, then only can we attain true peace and sustainability. I thank you all very much. Thank you. Anshul ji raised the very important part of what today we're gathered here to discuss is how do we as countries come together to share our water resources and to share our best practices, because there's so much to be learned from each other. And so thank you so much for that. And someone I'm very, very personally excited to be welcoming on stage to share his address. As I mentioned, a legacy, a history of protecting Ma Ganga, of really bringing innovation at a time when I was just watching your TED Talk yesterday, actually, and I was so inspired by what you shared about coming in a place where everybody has a solution. And there is such despair and confusion, and yet starting from somewhere and doing multiple things together. And the books that you have written and the wisdom that you have given so freely. So I'm speaking about none other than the former Director General, National Mission for Clean Ganga, Shri Rajiv Ranjan Mishra ji. जोरदार तालियों से सभी उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि गंगा जी का जो उनका समर्पण रहा है, जो उनकी लीडरशिप रही है, सच में वो सराहनीय है और हम सबको बहुत ज़्यादा गर्व है उनके इस कार्य के लिए। तो रिक्वेस्ट श्री मिश्रा और सभी हमारे अतिथियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए स्पेशली अपना 2 शब्द उनको प्रेरणा दे। प्रणाम। सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। जय जय गंगे। आज मुझे यहाँ आकर एक अजीब सी अनुभूति हो रही है, बहुत सारा उत्साह आ रहा है। पूज्य स्वामी जी को, पूज्य साध्वी जी को, माननीय विधानसभा अध्यक्ष, our friend, it's very difficult to find a diplomat who is as inspiring and friendly like Mr. Svane, and all other dignitaries. When we started Namami Gange program, and why this is important, today we are celebrating World Water Day. The theme is water and peace. Now let's just reflect.
और हमारे पास दुनिया भर के एग्जाम्पल्स आएंगे कि वाटर को लेके झगड़ा कहाँ कहाँ हुआ है। इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स होते हैं, दो देशों के बीच में भी झगड़े होते हैं। और आप छोड़ दीजिए, आई वॉज इरिगेशन सेक्रेटरी, एक स्टेट में भी दो रीजन के बीच में भी पानी को लेके झगड़ा होता है, बिकॉज नो वन वांट्स टू पार्ट विथ, वी फील कि पानी हमारा है, पानी हमारा नहीं है। दैट इज वेयर द होल मिस्टेक कम्स। See, when water is given by nature, it does not differentiate between boundaries. It flows freely. हम गंगा जी के किनारे बैठे हैं, गंगोत्री से निकल के गंगा जी शहरों में भी जाती है, गाँव से होकर गुजरती है, जंगलों से होकर गुजरती है, और कोई भेदभाव नहीं करती है, सबको अपना पानी देती है। इसके अंदर जो जीव जंतु हैं, रुचि बडोला मैडम ने बताया, हमारे साथ काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। एंड इनको देख करके, और स्पेशली जो गंगा प्रहरी हैं, मुझे और भी ज़्यादा हर्ष है, क्योंकि जब हमने शुरू किया था ये सारा काम इतना स्ट्रांग हो जाएगा और इतना कुछ काम होगा, किसी को उम्मीद नहीं थी। दैट्स वाई जब आप देखते हैं तो जल को लेकर बेसिकली समस्या क्या है, या तो कहीं पे जो बहुत ज़्यादा पानी है फ्लड आ जाता है, या तो पानी बहुत कम है वहाँ पे ज़्यादा झगड़ा होता है, टू मच टू लिटिल, या पानी बहुत गंदा है, टू डर्टी। और इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो काफ़ी कुछ जो झगड़े हैं वो कम हो जाएंगे और हम थोड़ा सा पीसफुल तरीके से जाएंगे। सो दो तीन चीज़ है जो समस्या कहाँ खड़ी होती है। बी स्टार्ट डिवाइडिंग वाटर इन साइलोज। इस डिपार्टमेंट का पानी है, ग्राउंड वाटर है, सरफेस वाटर है, नदी का पानी है, ये हमारे कुएं का पानी है, हमारे अपने घर का पानी है, और हम समझते हैं कि कोई और आकर के इन सारी समस्याओं को दूर करेगा। एक्चुअली वी हैव टू डू इट आवरसेल्फ। जब हम लोगों ने नमामि गंगे में कार्य करना शुरू किया तो समस्याएं इतनी लगता है कि कभी कुछ नहीं होगा। आप भी अगर जल की समस्या को देखोगे, अगर आप प्रॉब्लम की ओर चले जाओगे, यू विल फील कुछ नहीं हो सकता, बट एक्चुअली हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और उसका तरीका क्या है, अगर हम एक साथ जुड़ जाएं, एंड स्पेशली आई एम एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स हु आर हियर, द यूथ एंड ऑल द Ganga Prahari and similar people. As someone very rightly said, we all are Ganga Prahari. That spirit has to come, and we all are Jal Prahari. We have to save water. We have to look at, and all the students are here. आप सब लोगों ने जल चक्र पढ़ा होगा, वाटर साइकिल स्कूल में पढ़ाया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली एज वी ग्रो, एज वी लर्न मोर टेक्नोलॉजी, मोर इंजीनियरिंग, हम उन बेसिक चीज़ को भूल जाते हैं। वी स्टार्ट क्रिएटिंग सिटीज जहाँ सारा कुछ कंक्रीट होता है, पानी कहाँ से आएगा, पानी कहाँ जाएगा, इन सब बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं। सो इफ़ यू लुक एट, लर्न फ्रॉम वाटर, लर्न फ्रॉम आवर ट्रेडिशन ऑफ वाटर कंजर्वेशन, नदियों को किस तरह से करते हैं, तो काफ़ी कुछ काम हम कर सकते हैं। और एक इसमें सबसे बड़ा अप्रोच जो मैंने कहा, जो मेरे टेड टॉक की बात की, जब हमने शुरुआत की थी तो लगता था कि कैसे होगा, कहाँ से शुरू करें। कोई आपको बोलेगा कि पानी बढ़ा दो, अविरलता जरूरी है, निर्मलता जरूरी है, कुछ और कोई घाट बना दीजिए। सॉल्यूशन क्या है, जब आप नदियों को देखेंगे, जल की समस्या को देखेंगे, आपको एक फ्रंट पे नहीं कई फ्रंट पे काम करना पड़ेगा और जल्दी करना पड़ेगा। इसलिए हर जगह पे थोड़ा थोड़ा काम शुरू करना पड़ेगा, और वही हम लोगों ने किया और वही करना है। आज हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए जल जीवन मिशन लेके काम कर रहे हैं, नमामि गंगे है, जो ग्राउंड वाटर के लिए अटल भूजल योजना है। सो इतने सारे कार्यक्रम हैं और सबको मिला करके करना है। और इसलिए सबसे ज़रूरी क्या है, दो चीज़ें हैं, अलायंस बनाइए। We just heard about the Nordic Water Alliance. I mean international alliance, international support. Ganga is also a transboundary river. We need lot of cooperation. We need lot of collaboration. That is at the higher level. You also need collaboration within the states, between states. अगर एक नदी को लेकर के प्लान बनाएंगे तो सबका होना चाहिए, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, जो हम यहाँ बैठे हैं, हम कैसे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, नेबरहुड में हम पानी को कैसे मिलकर रेन वाटर को बचाते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कोलैबोरेट करें। हम लोगों ने नदियों को एक बचाने के लिए रिवर सिटी अलायंस बनाया, बिकॉज शहरों में ही नदियों की ज़्यादा समस्या होती है। आज वो रिवर सिटी अलायंस हैज़ नाउ बिकम ग्लोबल, and Denmark is also part of that river city alliance. So I think we are very happy several countries have joined. So इस तरह से alliance बनाना होगा, साथ जुड़ना होगा, जो हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के शुरू में ही हमने जो नारा लगाया, इस स्पिरिट को आगे ले जाना होगा। And I can tell you, I am very hopeful. I have lot of faith. I have lot of positivity in this. क्योंकि जो हमने 4-5 साल में किया वो काफ़ी काम हो गया है। That सोच कि काम हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। किंतु आई विल ऑल्सो टेल यू, वी शुड नॉट बिकम वेरी हैप्पी कि एवरीथिंग हैज बीन डन। ऐसा कभी नहीं होता है। जैसे आप अपने घर को, लोग हमसे हमेशा पूछते हैं गंगा कब साफ होगी। एक आंसर है कि गंगा साफ हो चुकी है,
एक लोग बोलेंगे कि कभी साफ नहीं होगी, मेरे जीवन में गंगा साफ नहीं होगी। गंगा एक एग्जाम्पल, किसी भी नदी के बारे में यही बात कर सकते हैं। बट कोई आपसे पूछे कि आपका घर कब साफ हो जाएगा, कैन यू से दैट योर हाउस इज क्लीन एंड यू नीड नॉट क्लीन इट अगेन? So same thing is there. We have to clean and we have to keep it clean. We have to use water, we have to conserve water, and we have to increase the source of water. We have to protect all the sources of water. So what is most important is we must inculcate. We talk about so many R's: recycle, reuse, reduce. But most important R is respect for water. Think water is not only for you, water is for aquatic animal, water is for everyone, it's for plant, it's for flora, fauna. जैसे nature ने किया था, if you go back to nature and learn from nature, there is lot of tradition in India where we can actually pick up. और दूसरी चीज़ especially जो कि स्वामी जी यहाँ इस आश्रम में हमें काफ़ी कुछ सिखाते हैं और करते हैं, हमें आस्था तो बहुत है, हम आस्था के केंद्र में बैठे हैं, लेकिन हमारे साथ समस्या क्या होती है, आस्था कर्तव्य में नहीं बदलती है। So today when we are here on the World Water Day, faith is important, respect is important, reverence for water is important, but duty for water, responsibility for water is equally important. So I think let's all join hand today and think how we can how we can collectively traverse this journey from being reverential to being responsible. Because that is where all the solution will come. That is where the water scarcity can be tackled, conservation will improve, rivers will be clean, and then once you do all these things, once you make a water secure world or water secure India, naturally prosperity is going to be there, and once you have that kind of situation, automatically we will also have peace. So I think with this, once again, I congratulate all the volunteers, all the participants, all the collaborators, all of us who have all here, and then there is a kind of a story, there is a kind of inspiration for everyone that हम सब साथ मिलके इस काम को कर सकते हैं, and then we have very clear line of achievements where we are seeing, we are in Uttarakhand where when we started here, we had all kinds of issues here. छोटी छोटी जगहों पे सामान कैसे जाएगा, प्लांट्स कैसे बनेंगे, we completed all the STPs here. I mean ये स्पेशल है क्योंकि यहीं से हम लोगों ने शुरू किया था. स्वामी जी को याद होगा, एक हम लोगों ने यहाँ पे बड़ा कुछ साल पहले किया था, from sewer to सेल्फी पॉइंट. इसी ऋषिकेश में एक बड़ी समस्या थी, आज इसी ऋषिकेश में हमने उन समस्याओं को साथ मिलकर सॉल्व किया है. सो वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड वाटर डे, एंड लेट्स अगेन टेक ए प्लेज कि नहीं रुकेंगे, स्वच्छ करेंगे. जय जय गंगे, नमामि गंगे, हर हर गंगे. So now I'll request Pujya Sadhvi Bhagawati Saraswati ji, the Secretary General of the Global Interfaith Wash Alliance and the President of the Divine Shakti Foundation. I request Pujya Sadhvi ji to bless us on this occasion with her message. Ganga Maya ki, Bharat Mata ki. His Holiness Param Pujya Swami Ji Maharaj, His Excellency, our respected ambassador from Denmark, who is not only an ambassador of the country of Denmark, but actually an ambassador of protection, our respected Freddy Svane, our respected Shri Mishra ji, our Shri Anshul Jain ji, our chief guest, Srimati Ritu Khanduri ji, our Vinod Mishra ji, Mr. Kasper, also from the Danish Embassy, doing wonderful work and really leading the change in water. All of the beautiful dignitaries, Richa ji, Monica ji, all of the dignitaries on the dais, और आप सभी लोग. पिछले साल जब G20 यहाँ हुआ, हमारे Honorable Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्लोगन दिया. वो अपने शास्त्र का स्लोगन था क्या? किसको मालूम है? G20 का मेन थीम क्या था? वसुदेव कुटुंबकम. वसुदेव कुटुंबकम का क्या मतलब है? मैं अपने बच्चों से पूछ रही हूँ, किसको मालूम है वसुदेव कुटुंबकम मतलब क्या है?
world is a family. Vasudev Kutumbakam, the world is a family. लेकिन वो केवल कोई random family नहीं है. Vasudev Kutumbakam does not mean we are just some random family. It means very specifically, we are the family of Vasudha. Vasudha is the goddess of the earth. So we are actually the family of the goddess of Mother Earth. We are her family. उसी को याद करते हम अभी यहाँ की अभी की स्थिति को देखेंगे. We've got some bad news and some good news. मैं bad news से शुरू करूं ताकि we can end with the good news. But it's important to look at bad news. Usually अध्यात्मता में हम लोग bad news के बारे में बात नहीं करते. We keep everything very, very positive. And that's wonderful. We should be positive. लेकिन जब तक हमको मालूम नहीं है कि actually real स्थिति क्या है, then we cannot bring about a change. If we don't know what the situation is, we cannot solve it. COVID की time, भारत में कितने लोगों का शरीर शांत हुई? किसी का पता है? पूरी COVID pandemic में भारत में कितने लोगों का शरीर शांत हुई? लगभग, चलो मैं बताती हूँ, 5 करोड़. लगभग, नहीं sorry, not 5 करोड़, 5 लाख. 5 लाख का लोग, about 500,000 people died from COVID pandemic in all of India. पूरा जो 3-4 साल की pandemic, करीब 5 लाख लोग. हर साल केवल भारत में कितने लोग स्वच्छ जल की कमी से मरते हैं? करीब 2 लाख. इसका मतलब है कि केवल 3 साल में, और वो भी every year. COVID though, within 100 years it comes once. This is every year. Every year we are losing about 200,000 people in India. Not due to a virus in the air, but due to the lack of clean water. अब आप सोचिएगा, कोविड की टाइम सभी कुछ भी करने के लिए तैयार थे. चलो स्कूल नहीं जाएंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे, शॉपिंग के लिए नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे. We were ready to do everything. Ready to make every change. Wearing masks, social distancing, whatever we had to do. ताकि किसी तरह से जीवन बच जाए. But every year, we are losing 200,000 people just due to lack of clean water. And in the world, more people are suffering and dying due to lack of clean water than due to all forms of violence combined. तो ये बताओ आजकल मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है? इजराइल पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है, लोग मर रहे हैं. यूक्रेन में, रशिया में क्या हो रहा है? युद्ध में, इतने सारे जगह में युद्ध हो रहा है. हम लोग वाटर फॉर पीस के बारे में बात कर रहे हैं. And yet, more people are suffering and dying from lack of water than all of these wars combined, than all violence combined. We speak about gender-based violence, drug-induced violence, communal violence. Everything is very wrong. रुकना चाहिए उसको. We have to stop it. लेकिन every year we are losing more people simply due to lack of clean water. एक last बात, bad news, फिर हम जल्दी good news में आ जाए. अभी recently Yale University, बहुत ही prestigious university, ने एक study किया पूरी विश्व की water की स्थिति.
180 देशों में से, 180 countries में से India was number 141. ये गौरव की बात नहीं है. 180 देशों में से हम लोग 141 था in the situation of water in the nation. गौरव की बात नहीं है. जब हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, और बनने की बात नहीं है, भारत तो विश्व गुरु तो है ही है, लेकिन विश्व गुरु का मतलब केवल अध्यात्म था भी नहीं. गुरु is the one who brings light. केवल spiritual way में नहीं, केवल अपने मन, केवल अपने दिल में नहीं, बल्कि अपनी जीवन जीने की ढंग में भी. If we are going to bring that light to the world, विश्व गुरु तो है ना? सभी agreement में है, भारत तो विश्व गुरु है ना? तो अगर हम सचमुच विश्व गुरु, तो हमें वो लाइट दिखाना है कि how to save and protect and preserve our water. Because water, as every other speaker has said, water is life. Upanishad में लिखा हुआ है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृधः कस्य स्विद्दनम्. It means everything in the universe is divine, pervaded by the divine. Every species, every being, everything is divine. Therefore, ध्यान रखो, कुछ भी चीज अपनी ही ऐसे मत मानो. Everything belongs to the divine and everything is divine. तो हमारे कर्तव्य क्या है? इसको बचाना. अब जल्दी से जल्दी आपको मैं बताती हूँ आप कैसे बचाएंगे, because that is the good news. Every one of us has the power to be the solution. 3 very simple ways. Number 1, what you eat. ये बताओ, यहाँ नॉन वेज कौन कौन खाता है? हाथ खड़े कर दो. कोई भी नॉन वेज खाते हैं, हाथ खड़े कर दो. ठीक, पता नहीं कि शायद शर्म की बात है, चाहे सच बात है, लेकिन जो भी है, बस वही मैं सोच रही हूँ. नो प्रॉब्लम, ब्यूटिफुल. अगर आप नॉन वेज खाते होंगे, I will give you one statistic, because changing your diet is perhaps the most powerful thing you can do to save water. मान लीजिएगा आप 2-3 दोस्तों के साथ बर्गर्स के लिए जाते हैं. सोचो उसी बर्गर्स में कितने जल जाते हैं. सोचो करीब करीब कितना होगा. चलो समय की मर्यादा से मैं बताती हूँ. 10,000 लीटर, 10,000 लीटर पानी. एक बार आप लोग बर्गर्स खाएंगे, 10,000 liters of water go into that one meal of hamburgers. आप जब रोज स्नान करते हैं, आपको 6 महीने लगेगा 10,000 लीटर यूज करने के लिए. इसका मतलब अगर आप बर्गर्स खाएंगे, तो क्या आप 6 महीने बिना स्नान के लिए जीने के लिए तैयार है? तो क्या करेंगे? या बर्गर्स मत खाओ या 6 महीने तक स्नान नहीं कर पाएंगे. चिकन तो इज अबाउट 1/3. तो अगर आप चिकन खाएंगे तो 2 महीने तक बिना स्नान के लिए जाना पड़ेगा. कोई तैयार है? That's the water. That is the power of water. The amount of water in 1 meal of chicken is what you use in 2 months of bathing. So if we care about water, if we care about anything, but there isn't time to give all of those statistics, so we'll just leave it with water. Non-veg खाने से शाकाहारी बनने की यात्रा is the single most powerful thing you can do to protect water.
और even अगर पूरा vegetarian शायद आपको लगेगा कि that is too difficult, ठीक है, कोई बात नहीं. जितना कम नॉन वेज आप खाएंगे इतना ही जल आप बचाएंगे. Number 2, what you wear. So number 1, what you eat. Number 2, what you wear. The fashion industry. मैं नहीं कह रही हूँ कि सबको संन्यास लेना है, लेकिन fashion industry is one of the greatest polluters of our water on the planet. तो ऐसे मत सोचिएगा कि every month I need new clothes. For every wedding I need new clothes. Every turn of the season I need new clothes. Realize all of that fashion is actually polluting our water, polluting our land. All of the chemicals from the factories are going into our soil, into the groundwater, into the rivers. Uske साथ साथ, number 3, बहुत सारी चीजें शेयर करने का, but I realize I'm over time, तो मैं जल्दी समाप्त कर लेती हूँ. Number 3, what you use. So it's not just what we wear, it's all of the things we use. All of the bottles of water, of soda pop, Coke ho, Pepsi ho, Sprite ho, Fanta ho, जो भी हम पीते हैं, that comes in plastic water bottles. All of this single-use plastic is polluting the water once you throw it in, but even usse pehle hi, all of the factories in which the bottles are being produced, the factories in which jo hum log upyog karte hain, all of these factories' waste is spewing in the air, in the ground, in the water. तो अपनी ही वाटर बॉटल अपनी साथ ही ले जाना है जहाँ जहाँ जाते हैं. अच्छा ये बताओ, अगर आपके पास अभी यहाँ बैठते हुए अपनी ही वाटर बॉटल अपने साथ है, हाथ खड़े कर दो, हाथ खड़े कर दो. बहुत बढ़िया. चलो अपने बच्चों के पास है, इनके लिए थालियां बजाओ. Beautiful. Adults don't have it, but the youth have it. Wonderful. Not wonderful for the adults, but wonderful for the youth. Great. Everybody should move through the world with their own water bottle. और जब भी शॉपिंग के लिए जाते हैं अपनी ही झोला लेकर जाना है. Take your own bag. These are small things, tiny things, simple things that we do. Last, इतनी याद रखिएगा, जब भी शॉपिंग के लिए जाते हैं जो आप खरीद लेते हैं वो कहीं ना कहीं कोई फैक्ट्री में बनी हुई है. उसी फैक्ट्री की वेस्ट चाहे हवा में, चाहे सॉइल में, चाहे ग्राउंड वाटर में जाते हैं. तो स्वयं से यही पूछना है कुछ भी चीज खरीदने से पहले कि क्या ये सचमुच जरूरी है, क्या मैं इसके बिना जी सकता हूँ. Ask yourself, can you live without it? Can you make a choice for a healthy environment? क्योंकि ये सब अपने हाथ में है. ऐसे नहीं कि केवल सारे काम सरकार करेंगे, सरकार तो बढ़िया काम कर रहे हैं, पर हमारे बिना कुछ नहीं होगा. हमें भी आगे आना है. So we must all vegetarian बनने, or whenever we are dressing, shopping, whatever we're doing, ask ourselves, what is the ripple impact of this? Is it violence and harm and pollution, or is it peace? Because we are all here to bring peace in the world. शांति कौन लाना चाहते हैं विश्व में? हाथ खड़े कर दो. चलो, मैंने अभी इतने आसान की चीज बताया. चाहे मिडल ईस्ट के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे यूक्रेन के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम जितने लोग जल की कमी की वजह से मर रहे हैं उनके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं. धन्यवाद. With that, I'll request our special address for today,
our beloved His Excellency Freddy Svane, Ambassador at the Royal Danish Embassy. And as I've mentioned, one that no matter in Delhi or all through the travels that he does, he really embodies what it is like to represent diplomacy for the environment, for our water resources, and meets everyone with such joy, with such friendliness, with such approachability. And it is a great honor and a great privilege to welcome you to Parmarth Niketan. Please, we are all waiting to hear from you. Thank you very much indeed. I'm extremely touched. And Swamiji, Sadhvi, honorable speaker, and friends on the dais, and more importantly, friends off the dais. When I do speeches, it has to come from the inner, from your heart, your body, and from your mind. Standing here, watching Ganga, flowing peacefully, a source of life, a stream of hope, and yet, boys and girls, ladies and gentlemen, friends, we have destroyed this river. It's a holy river, not only for you here in India, it's a holy river for all of us. We have destroyed it. Why? Not because we are stupid, but we are careless. And I like the last intervention, appealing to the inner of each and every. I look very young, I admit, don't laugh. I was born in the era of plastic fantastic. Today, I have no taste for waste. And if I should convey a message from my side to all the youngsters sitting here, I'm the happy father of 4 kids, 7 grandchildren, and a dog. When I'm conveying a message to all of you, it should be take individual responsibility. If you throw a piece of plastic wherever you go, one day it will end up in the holy river, Ganga. So you have to take responsibility. There's no way around it. You know, this is an Apple phone. An Apple phone. We in the West, we are totally addicted to this technology. Have you ever thought about the logo of Apple? That's an apple. But basically, it's also Mother Earth. And every time, and this is an old version, I have to say, I'm not rushing to New York, I'm not rushing to Washington or Delhi to buy the newest version. Why? Because it would be stupid. Every time we consume new electronics, we are taking a big chunk of Mother Earth. And therefore, I do hope you, the youngsters gathered here today and above, that you will keep in mind that this abode here will give you inner peace, inner harmony, and will open your hearts towards a better future. There's no future without individual responsibility, and you have to take it. The Green Strategic Partnership, which has been mentioned several times, is a kind of common agenda for 2 nations, very big in differences, but we share the common goal that we have to take responsibility. And it's based on 5 S's, and it's basically common sense. It's the scale of India, but it's also not about how many people you are here. It's about the potential, the way in which you can change the world. Then skills from Denmark has been said by Honorable Anshul Jain, Vinod Mishra, and whoever.
that we have some technologies in Denmark and in the Nordics. That's true. But don't forget that we are extremely high-tech, and whatever we produce is extremely costly. Affordability is one of the answers how this world can survive. Resilience. If I drop this Apple phone like this, it will crash. It's a bad idea. I would like to have an Indian version made out of bamboo. Totally out of bamboo. So, scale and skills, but we also need to add speed, because if speed is not really on top of our minds, then this river, this holy life stream, one day it would not be there, and then it's too late. We have the sustainable development goals. They have to be delivered in a few years, 2030, ladies and gentlemen. We have an urgency never seen before. Scope, whatever we are doing, India, Denmark should go beyond that. Therefore, we should be a source of inspiration, and we should be inspired. That's what is needed. Last but not least, sustainability. I'm not in any way teaching nor preaching to you what to do. It's basically your responsibility. But we would like to inspire you. There's only one way forward to be inspired. Yes, 1 minute of questions, that we take later. I have to say, I mentioned I have 4 kids. And in Denmark, we are a welfare-based society. But still in the family, it's a huge family in a Danish context. We decided that from year to year, we should reduce our consumption of water by 10%, our consumption of power by 10%. We have done that throughout all the years. We did it, boys and girls. We did it because we felt that we had to take action. We couldn't sit watching the TV channels with breaking news, war here, there, and everywhere without taking action. So we can do it, you should do it, and hopefully you will do it. Keep in mind this Ganga, we are on the shores of Devi Ganga. We see how this stream of life still gives a lot of hope. Water for peace. It's not only peace in our time, it's not only peace on the planet, it's also inner peace. And I do hope that you will be inspired by today's focus on the World Water Day, which is coming shortly. But let's be at peace from within. Only then we can open our hearts and spray the water of the holy river Ganga to ourselves and to our friends. Dhanyavad. Truly, inner peace for water for peace. So, इतना समय नहीं है सबके लिए ट्रांसलेट करने के लिए, लेकिन जो पूज्य साध्वी जी ने कहा और अभी जो ऑनरेबल एम्बेसडर ने कहा, हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं और हम क्या खरीदते हैं, वो सब हमारे कंट्रोल में है. और अगर हम उस पर ध्यान दें कि उस चीज़ों को खरीदने को हम कम कर सके, जो चीज़ें हम खाते हैं उसको ध्यान दें. जैसे साध्वी जी ने कहा कि हम कैसे शाकाहारी बन सकते हैं और शाकाहारी बनने से पानी की बचत कैसे हो सकती है. तो संक्षेप शब्दों में हम सबके हाथ में वो चाबियां हैं जिससे हम अपने जल को संरक्षित कर सकते हैं. और आज उस संकल्प को यहाँ से लेके जाएंगे, क्योंकि ऑनरेबल एम्बेसडर ने कहा कि उनका परिवार, वो 4-5 जन अपने परिवार में, वो अगर अपने पानी की, अपनी ऊर्जा की डिमांड कम कर सकते हैं, यूज़ कम कर सकते हैं, तो हम सब ये संकल्प ले सकते हैं. तो बहुत दोबारा से ज़ोरदार तालियों से उनका अभिनंदन.
And with that, it is my privilege, my blessing, my honor to welcome Param Pujya Swami Chidanand Saraswatiji Maharaj, the president of Parmarth Niketan Rishikesh, the founder of Global Interfaith Wash Alliance, our guru, our respected Param Pujya Swamiji. भारत माता की, धरती माता की, धरती माता की, जल देवता की, हर हर। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज हिमालय की धरती पर, जिस हिमालय की धरती ने हमें जल के मंत्र दिए, जीने के मंत्र दिए, जल देवता है, धरती देवता है, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। ऋग्वेद के 12वें अध्याय के प्रथम सूक्त में भूमि सूक्त है। द होल सूक्त इज डेडिकेटेड टू भूमि, टू मदर अर्थ। मुझे तो लगता है whatever this divine panel on the stage has said, everyone has spoken so well. And here is our Danish ambassador, divine ambassador, our friendly Freddy. Yeah, very friendly. Mostly ambassadors are not like you. Yeah, you are very, yeah, it's true. Yeah, very friendly, Freddy, and our Mishra ji, Rajiv Ranjan Mishra ji, our Vinod Mishra ji. Very friendly too. Thank you. And our Ritu ji. You know, we are talking about sanitation, water, hygiene, and her husband has given leadership to this nation as a health secretary, a very powerful health secretary of this nation. How the COVID was handled is because of him. And our Honorable Prime Minister of India and the Health Minister of India, who really geared the whole nation under the leadership, a great leadership. Always I tell you about our Prime Minister of India. सच मानिए तो Prime Minister India हमारे देश का सौभाग्य है कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और हमारे राजेश भूषण जी की पत्नी, धर्मपत्नी और स्पीकर ऑफ आवर असेंबली ऑफ उत्तराखंड विधानसभा श्रीमती रितु खंडूड़ी जी, आवर जीवन में मुस्कान देने वाली हरिओम स्माइल के माध्यम से स्माइलिंग मोनिका जी, आवर बागड़ोदिया जी, दिव्यांगता को फ्री करने के लिए जिन्होंने अपने जीवन का संकल्प बनाया है, और हमारी रुचि जी, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और उत्तराखंड में उनको हेड करते हुए जिस तरह से उन्होंने पहली बार दूसरी बार इन गंगा प्रहरियों को जगाया है, बताया है कि कैसे जीवन जीना है, कैसे हमें गंगा के पैरोकार बनना है, पहरेदार बनना है, उनका भी मैं जोरदार तालियों से कहूँगा अभिनंदन करें। हमारे मनीष जैन जी बहुत प्यारा बोले, और हमारे सारस्वत जी, और साथ में बैठे हुए अंशुल जैन जी, और उन्हीं के साथ बैठे हमारे काउंसलेट के चीफ आपके कैस्पर जी, जो शाम को यू आर गोइंग टू स्पीक in our great assembly on Mother Ganga. So, हमारी गंगा नंदिनी जी और पूरी entire team of Global Interfaith Wash Alliance, Parmarth Niketan, Ganga Action Parivar, and at the same time, all these beautiful organizations coming together and celebrating World Water Day. The theme is given to us. The theme is given to us, water for peace. To me, if no water, no peace. No water, no smile. No water, no coffee. No water, no conference. सच्ची बात है. Whatever you see on this earth is because of water. Problems are there. And who has created this problem? Our friendly Freddy has told us, and Sadhvi ji also, and others. Let me tell you,
if we keep talking about the problems, then we will be stuck with the problems. Sadhvi ji very simply has given all those solutions. What we eat, what we wear, खाने से पहनने तक की यात्रा, पीने से पहनने तक की यात्रा और खाने से खर्चने तक की यात्रा, कैसे खर्च करते हैं हम लोग। दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है और वो है सॉल्यूशन के लिए, वो है फर्स्ट की इज आवर बिहेवियर चेंज, सेकंड इज आवर लाइफस्टाइल चेंज, थर्ड इज हाउ वी थिंक। सारी प्रॉब्लम जो है इज हियर, हाउ वी थिंक। इसलिए अगला सॉल्यूशन है दैट हाउ नाउ वी कैन वर्क टुगेदर। To me, togetherness is the key. If we work together for our culture, for our nature, our future will be protected. Otherwise, neither our future nor Mother Earth will be protected. Mother Earth doesn't need us. She can survive without us. These rivers don't need us. They can survive without others. We have seen in COVID, we were locked inside of house, but they were free and they were dancing. Our peacocks, our elephants, all the animals, our dolphins, our fish, they were all dancing here every day we could see. Why? Because we are the problem. If we are the problem, we are the solution. This is what we have to take it from here. We are the problem, we are the solution. If we are the solution, four things together. Let us dedicate ourselves with 4 T's program: our time, our talent, our technologies, and our tenacity. If we take this pledge together that we are going to dedicate this 4 T's program, then another 4 I's program. Let us, this information, today you go on Google, is all over. Everywhere this information is there, but we have to share this information in the villages, on the mountains, where our people are not aware. First is information, second is inspiration, and third is innovation, and fourth is implementation. This 4 I's program, for that we all have to come together. अगर हम साथ साथ नहीं आएंगे, पक्का मानिए, ना तो ये धरती बचेगी और ना ही हम बचेंगे। अगर हमें आने वाली संतति को बचाना है, हमें अपनी प्रकृति को बचाना होगा, हमें हमारी संस्कृति को बचाना होगा। भारत माता की जय, धरती माता की जय, वंदे मातरम। मतलब क्या है इसका? That we adore our mothers. Earth is our mother and we are her children. अगर earth is our mother, we are her children, what is our duty? Our mother earth is in ICU. Our rivers are in ICU. And we are busy doing conferences. Time is over. Time is now. If we are not awakened, believe me, we read in the scriptures, we read in the history, there was a river called Saraswati. And believe me, in 25 to 30 years, we will be reading there was a river called Mother Ganga. Who is killer of the Mother Ganga? Who is killer of this Mother Earth? Us, together. This is a green crime. That's why we all have to work together. Mahatma Gandhi said so beautifully, there is always enough for everyone's need, but there is never enough for even one man's greed. We have to draw the line between the greed and the need. And spirituality, because why we are here? Why the Danish ambassadors and all these people are here? Because this land has given the answer. To me, without spirituality, there is no sustainability.
no sustainability. Who will give us this thought? Who will give us this thought? Who will draw the line between greed and the need? These scriptures are telling us, don't be greedy. Isha vasyamidam sarvam yad kincha jagatyam jagat tena tyaktena bhunjita magrita. Don't be greedy. Share with others. Magrita means don't be greedy. Be greeny, not greedy. Share with others. This is not only for you. We are here on this earth to share. So that's why Mahatma Gandhi so beautifully said, let us think. Let us draw the line between greed and the need. We have to move from greed culture to a green culture. Use and throw culture is not our culture. Use and grow, this is our culture. So we have to move from use and throw culture to use and grow culture. अगर हम ऐसा करेंगे, believe me, only then we will be survived. If we want to survive together, if we want to thrive together, this is the only way. Let us work together. There are so many thoughts are coming to me today, but time is very short. That's why I will tell you all, let us stand up together, give our standing ovation to Mother Earth, to these rivers. Because of them, we are here. जल है तो जीवन है. जल यदि समाधान है तो जीवन भी समाधान है. जल यदि समस्या बन गया तो जीवन भी समस्या होगा. इसलिए हमें जल क्रांति से जन क्रांति की ओर बढ़ना होगा. जल अभियान से जन अभियान की ओर बढ़ना होगा. और इस जल आंदोलन को हमें जन आंदोलन बनाना होगा. हाथ खड़े करके एक दूसरे का हाथ पकड़े, एक दूसरे का हाथ पकड़ ले. Let us hold hands of each other. Let us take a pledge today on this beautiful World Water Day 2024 that we promise to Mother Earth, we promise to these river bodies, we promise to each other that we will survive together, we will thrive together, and we will stop this single-use plastic. Water we cannot make, but we can save water. हम बना तो नहीं सकते हैं, बचा तो सकते हैं. हम बना नहीं सकते लेकिन बचा तो सकते हैं. इसलिए नदियों के जल को प्रदूषित ना करें, नदियों के जल को बचाएं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, छोटे छोटे स्टेप उठाएं जो साध्वी जी ने हमें बताए और जो हमें सब ने बताए. अगर करेंगे तो पक्का मानिए कि ये देश भी बचेगा, ये विश्व भी बचेगा और ये भारत की संस्कृति भी बचेगी. विश्व गुरु से ले अब धीरे धीरे हमें वाटर गुरु बनना है. विश्व गुरु टू वाटर गुरु. वाटर गुरु जोरदार तालियों से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे देश के जल शक्ति मंत्री जी ने, इसलिए नमामि गंगे के हमारे राजीव रंजन जी यहाँ पर हैं ताकि हम ये संकल्प ले सकें. और उन्होंने कहा था सबसे पहले गंगा ने मुझे बुलाया है, आज गंगा ने आज सबको बुलाया है, इसी तट पर बुलाया है. इसलिए हम जिएंगे साथ साथ, अब वर्क करेंगे साथ साथ, अब होंगे कामयाब. हम होंगे कामयाब, हाथ हिलाते हुए हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन. शाबाश. भारत माता की वंदे वंदे वंदे. After such a powerful speech, I would request सभी को ऊर्जा से, सभी को शक्ति से भर दी है पूज्य महाराज श्री ने. और ऐसा लग रहा है कि अब हमारी उत्तराखंड की शक्ति, हम उनको कहेंगे कि वो भी आए
और जिस तरह से वो उत्तराखंड को अपनी शक्ति से, अपनी लीडरशिप से आगे बढ़ा रही है, मार्गदर्शन कर रही हैं सारे बच्चों को, सारे गेस्ट को, आज वो अपने उद्बोधन से प्रेरणा दे। Our respected श्रीमती रितु खंडूरी जी, the Speaker of उत्तराखंड विधानसभा, Government of Uttarakhand, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। Thank you so much. World Water Day is being celebrated at the Parmarth Niketan, and on the dais is Param Pujya Swami Chidanand Saraswatiji, Pujya Sadhvi Bhagawati Saraswatiji, and of course the ambassador of the Danish ambassador, Freddy Svane. I picked it up. Shri Rajiv Ranjan Mishra ji, Shri Anshul Jain ji, Dr. Ruchi Badola ji, Smt Monica Singhal ji, Shri Vinod Mishra ji, and ladies and gentlemen, children. I was listening to all the dignitaries and they have been working on water. I am just a politician, but yes, I am also a citizen of this country, so I also understand water, understand what is water for people of India. World, yes. We talk of world peace. The theme this time is water for peace. In general conversation and in jest, lots of times we say, अगला जो युद्ध होगा, विश्व युद्ध, वो पानी के लिए होगा। वर्ल्ड वॉर जो अगली होगी वो पानी के लिए होगी। तो इसलिए it is no longer in jest, it is no longer a conversation, it is actually, we see it happening. If we don't do something immediately, there is something which is going to happen. We need to protect water. जरूरी है, पानी पहुंचाना है। अभी जल जीवन मिशन की बात हुई। I am very grateful to the Honorable Prime Minister of India that he decided in this 21st century he is going to be giving every household a tap, and a tap that gives us water. Excellent. We do need, because as a woman in Uttarakhand, I would like to tell you that till very recently, women 24 hours, out of 24 hours, 16 hours they were spending just to collect water. So Jal Jeevan Mission has been a lifesaver for young women in this state, in this country and in this state. So yes, where on one hand we need water, वाटर इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। हमारे जीवन के लिए, जीवन को जीने के लिए पानी बहुत आवश्यक है, लेकिन दूसरी तरफ उस पानी को बचाना भी है। वी हैव टू सेव वाटर। इफ वी डू नॉट थिंक ऑफ सेविंग द वाटर, देन हाउ आर वी गोइंग टू सर्वाइव? We are talking about river Ganga. I am not talking about river Ganga. I am talking about small sources in this country. स्रोत है हमारे पास। किसी ने सोचा कि उनको बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? वाटर रिचार्ज कैसे होगा इस देश में? गंगा जी पर सबका ध्यान है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन उस गांव के स्रोत पर किसी का ध्यान है जिसको अगर हम नहीं बचाएंगे तो गंगा जी में पानी कहां से आएगा? ऐसे बहुत से स्रोत हैं जो गंगा जी में आके मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने सोर्सेस को रिचार्ज, वी नीड टू रिचार्ज आवर सोर्सेस, वी नीड टू प्रोटेक्ट गौमुख, जहां से आती है गंगा जी। क्या हम उस इलाके को बचा पा रहे हैं? हाउ मेनी पीपल आर वी अलाउइंग टू गो टू गौमुख? आर वी गोइंग टू सी दैट फ्यूअर पीपल गो टू गौमुख? Are we going to see that the amount of clothes, chappal, rubber chappal, slippers, blankets that people leave there because they say कि हम नए वस्त्र पहन के आ रहे हैं, हम नया मन बना के आ रहे हैं? Are they coming with good heart? We do not know, but they're leaving their old clothes and coming back to wherever they live. How are we going to stop that? How are we going to stop wastage of water in this country? What is it that we need to do? As a child, I remember my father was in the army and we were traveling by train. ट्रेन से हम लोग कहीं जा रहे थे।
रेलवे स्टेशन पर पानी वैसे आज बिसलरी वाली बॉटल्स नहीं मिलती थी. We did not use बिसलरी waters. We would just use tap water. तो when I was at the railway station, there was a tap जिसका पानी बह रहा था. So my father said, go down and close the tap. I was petrified. मैं डर गई, मेरी ट्रेन छूट जाएगी. मेरे पिताजी मुझे कहाँ पानी बंद करने के लिए भेज रहे हैं? Why is he sending me down to the station to tell me to go and close the tap? I was scared. But of course he knew that the train has stopped there for maybe 20 minutes or 15 minutes. But that was one value which I carry till today. I carry till today. ब्रश करते हैं हम लोग, पानी चल रहा है. शेव करते हैं हम लोग, पानी चल रहा है. हाथ कपड़े धो रहे हैं तो बाल्टी में पानी बह रहा है. पौधों को पानी दे रहे हैं तो जम के पानी दे रहे हैं. So at the end of it, the water is going to deplete. How are we? What is the next step? As Pujya Swamiji said, are we just going to do conferences? Or are we going to change the value system of the world, of the country, of states? And how do we change that value system? We can change it. We can bring about the change. We can be the change. And we've seen it when our Honorable Prime Minister spoke about cleanliness. When he said Swachhta Abhiyan, all these young children sitting here even today will not let a paper fall from their windows, from their house on the streets. Because that value has been instilled in them. That value has been given to them. So we need to give this value to our children. It is gurus, it is teachers, it is parents who will give this value. Sanskar is absolutely important to give to the child. बच्चों को संस्कार देना होगा. जब तक ये हमारे जीवन की आदत नहीं बनेगी, ये संस्कार habit में नहीं आएगा, till this value doesn't become a habit, how are we going to protect our rivers? How are we going to protect our sources? What are we going to do about it? I love the words carbon, what carbon prints? Footprints. I love the words carbon footprints and phalana and chilana. Do they have meaning for people sitting? Are we able to make impact, or are these just words? I'm very emotional about certain things, and I just, as a politician, maybe I shouldn't be saying things, but I do, because words, particular way of doing things don't make sense to me. Instead of talking, what are we doing? Gaura Devi ne in 60s, पेड़ पकड़ा. There was a lady in our state, Gaura Devi. Aaj we are talking of planting trees. In 60s and 70s, she held on to trees and said, we should not cut trees. But are we doing that today? Of course, we are planting trees by thousands, lakhs. But is that value in ourselves to protect every sapling that we plant? Are we ready to do that? No. We just want to plant trees and then say, put a tick mark in our whatever where we are, that we've planted thousands of trees. How many have survived? Have we gone back to that? Have we seen that? So the first important thing is we need to change the value. We need to give you the sanskar. We need to understand. Is it easy to for a non-vegetarian to become a vegetarian? Is it easy for a woman to not buy a nice silk sari? Is it, carry your own bags when you go shopping? No. That is the practicality. It is not easy. But yes, if we start doing it when we are young, when we start instilling that habit in the child, then it is possible. It can be done. आज हम लोग प्लास्टिक के बैग लेके नहीं जाते ना सब्जी खरीदने. क्यों नहीं जाते? क्योंकि फाइन लगता है, चालान कट जाएगा. तो चालान के डर से हम लोग सब अपने कपड़े के थैले लेके चलते हैं. Good. So if it's the law, excellent. If it has changed how we are functioning, जीवन को जीने की शैली को बदलना पड़ेगा. We will have to change how we think, how we live. Each little small thing will make a difference. Switch off the lights when you're not in the room. Do not waste water. Try and avoid drinking bisalary. Carry your own bottles. I see that happening today. So that there are little things which are coming.
Sanskara, now I see steel glasses, we say steel bottles, or we see glass bottles. So that's an excellent thing which is happening. But there is miles to go. And we need to run. Because if we don't run and catch up these miles, then how are we going to protect our water? And if we cannot protect our water, then how are we going to live? How are we going to protect our earth? So बहुत ज़रूरी है, पानी आवश्यकता है हमारे जीवन के लिए. बिना पानी के लिए हम जी नहीं सकते. शायद 97% out of 100% is salt water. 2% is glaciers and 1% is drinking water. How are we going to protect that 1%? What are we going to do about it? Even if we change one thing, one person's or one child's way of thinking, I think that will be making a difference. We may not be able to change hundreds, but I'm sure we can change, even if we bring about a change. So it is important that we talk about it. Of course, seminars like this are important because at least we hear views. You are able to bring about a change in how people think. If not, people, जो छोटे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, उनके मस्तिष्क में हम एक ऐसा छोटा सा बीज डालने का प्रयास कर रहे हैं, जिस बीज को अगर उनके दिमाग में वो आ गया, तो ये बच्चे तो हमारे फ्यूचर है, they are the future citizens of this earth, of this world. And if we are able to tell them that how important it is, how important water is, how important it is to protect, replenish, recharge our water sources. Otherwise, as people are saying, there could be a world war for water. So we need to understand, we need to actually rethink, and as teachers, as gurus, as mothers, as fathers, as parents, as the Danish ambassador said, he has a family of 4 children and they've decided every year they are going to be reducing consumption of electricity, which is excellent. If we can also take inspiration and do something like that, we should. We should try and do small little things. छोटी चीजें करने की आवश्यकता, कोई बहुत बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं है. आप अपने घर में ही कर सकते हैं. अगर आप अपने घर में ही पानी की बचत कर लेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है. So I am really thankful and grateful. It was a very enlightening afternoon, though I had to come all the way from Kotdwar. I am in midst of election, but since Guruji called me, Param Pujya Guruji called me, Swamiji called me, so I took the opportunity to come here, and it was wonderful speaking to everybody. I hope I made some sense. As politicians, we don't know whether we make sense or don't make sense, but I spoke with my heart as you did. Thank you so much. बहुत सारे युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायक है, और स्पेशली मुझे लगता है महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक है, क्योंकि आप एम्बॉडी करती हैं उसको, और ना ही सिर्फ आपकी जो upbringing रही है, लेकिन आपकी खुद की leadership is the embodiment of that Shakti. So thank you so much for coming today with us. It's about the good practices in water management. It's a compendium of good practices during the Rapid Action Learning Workshop. And I'll request Madhuri Shukla ji, who's the communication specialist of UNOPS, to bring the books forward, and request all of our dignitaries to please stand up, and each one will be given one of these books. So it's beautiful. We launched the book. And then we give you a sacred plant, a sacred Rudraksha. The water blessing ceremony, hum kehte Vishwa Abhishek. It's a symbol. It's a symbol that we come together to protect, preserve, and serve our water resources. हम सब मिलकर के कार्य करेंगे, एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे कि पृथ्वी में जितने भी जल है, जितना भी fresh water resources है, we will protect those resources. सर्वे संतो निरामया